welcome to another brand new episode of Makk-Up, Shakk-Up. And today we have with us a professional bridal makeup artist, Ekta Bakshi from Ekta Bakshi Makeovers. She is one of the most bindas personalities in the makeup industry, and she definitely knows how to slay glitters and make all her brides glow, shine and sparkle. First of all, thank you for inviting me, giving me this opportunity to share my life experience, my life journey with you guys. And yeah, I'm looking forward to having a wonderful time together. Can we have a huge round of applause for Ekta? Thank you so much for joining us today. Straight off the bat, I want you to describe yourself in 5 nouns or adjectives, and the sentences should start with I am. Alright, I am fearless. I am ambitious. I am hardworking. No one knows that I am a very, very naughty, okay, yeah, literally naughty, and I am a very, very fun-loving person, which again people don't know. Like my Instagram family doesn't know that side of mine. Yeah, so these are the 5. I really like the answer. I'm naughty. Would you like to explain it further? So I'm naughty in the terms that I am very fearless. You know, मुझे कोई अब प्लीज ये दे मत देना, इसको कोई दिल पे नहीं लगाएगा इस बात को. तो अगर मुझे कोई डेयर वेयर देता है तो मतलब मेरे लिए इट्स वेरी नॉर्मल कि ठीक है, इट्स ओके, लाइक आई एम ओके, आई एम बिंदास. ओके, I'll reframe. Bindas is the word. Bindas is नहीं, bindas. I am bindas. I am bindas. Yeah, मतलब I don't take ज़्यादा मैं लोड नहीं लेती. हाँ, लोड नहीं लेती मैं इतना. ठीक है, हो जाएगा. Okay, so in a game of truth or dare, would you rather choose like dare or truth? Dare if it's in a good way. My preference would be dare any which ways, but yeah, dare. Okay, yeah, so Dare. that tells Coffee us how daring. bindas she is. Yeah, anytime dare, yeah. Okay, so when and how did you realize that you wanted to be a makeup artist, or that you wanted to pursue this as a profession? So have you always wanted this to be a profession for you? No. Okay. No, I never wanted to be a makeup artist. I think उस time पे nobody even know कि makeup artist type का कोई word भी होता है. It is always, and still it is in some areas, parlor वाले. Alright, so it was always like that, and I was a very, very tomboyish in my school. Like as I told you, I'm bindas. I've got more guys friends than girlfriends. You know, I'm like, chill out करेंगे ये वो. And my mom was like, ये मेरी बेटी मिस इंडिया बननी चाहिए, इसके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं, ये सुंदर है, ये है, इसे मिस इंडिया बना दो. So she was the one, and I gave my boards, and I was 17 years old, and I remember she looked out for a job for an air hostess at that time, in 2005 I'm talking about, and she said कि, and रात को she said कि तेरा सुबह इंटरव्यू है, तुझे चलना है. मैंने कहा मम्मा कहाँ चलना है, कैसे चलना है? नहीं, मैंने साड़ी वाड़ी सब अरेंज कर लिए हैं वो दीदी से, पार्लर वाली दीदी से, तू तेरा बस सुबह मेकअप हो गया. And 6 o'clock like you know they opened up that parlor for me, and I was in half sleeve. उन्होंने मुझे साड़ी पहनाई and everything. I was all set for my interview, जो मुझे नहीं पता लाइफ में क्या होने वाला है. And I still remember there were 5,000 candidates who came for that Air Sahara job, and only 90 girls got selected, and I was one of them. Wow. And I got my offer letter also when I turned 18. They said, okay, we are shortlisting you and finalizing you. And that's how my initial makeup journey started, wherein I got professionally trained in makeup, but it was a self-makeup, right? Because they train, and at that time, it was a very luxury thing to be an air hostess, okay? There was no low-frill airlines. There was only Air Sahara, Air India and Jet. That's it. Wow. So, but I never realized कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है. And I think I got trained in makeup at that time, and that's how it started. And I flew for about 9 years as in cabin crew. You've been in cabin crew for 9 years? 9 years. For Air Sahara only? It was Air Sahara, but then they sold out and it became Jet. And then last 4 years, I was totally flying international, which was Air India. Oh, okay. So last 4 years was actually a game changer, because I got a lot of international exposure. So it was like one day I am in US for 3 days, and then coming back in India, and then going to Tokyo, then going to Australia. So it was like that. So my exposure
started from there. And then I thought, okay, yeah, I kind of like, I was influenced with because I was influenced with the international market, the way they carry themselves. Every girl is very up to date and the self makeup is on point. So the journey of your makeup started in 2005. 2005. Yes. When you started doing makeup on yourself? On myself. So, us time pe, as an amateur, I used to do very good makeup. Okay, I used to do very good makeup. We can see that. As an amateur, I was best. As an amateur, what was like a simple makeup routine? What would it look like? As an amateur. Yeah. अब ये आप एक pro से amateur वाली बात पूछ रहे हो. अब ये answer. But still, out. I think for me, just a little concealer and lipstick and a mascara. Or a kajal and a mascara, that's it. Even on regular basis, stuff. I'm like that. Yeah, okay. That's it. But like when you decided to quit your cabin crew job, and how did you like come to the realization that you want to be a professional makeup artist? So in 2013, I got engaged in 2012 and it was 1 year of courtship. And during that courtship, we both realized, the working hours are very hectic, You are in US for like 3 days, you're sleeping according to their time and I'm over here. So I realized, and I'm a very, very family person. Like I am a sucker for family thing, okay? Ambition are there, I am ambitious, but when it comes to family, I think they take over here and then it is like this. So I realized, मैंने कहा यार ये तो नहीं हो पाएगा ना यार, ऐसे नई शादी तो नहीं चल पाएगी कि मैं 4 दिन पाऊँ और यहाँ पर है. And then so I decided that what to do. And then I got married and I just, I don't know, out of a blue, I started taking few seminars of makeup. Wherever I used to fly, I used to just take up seminars. I used to see online कि आज मैं यहाँ जा रही हूँ तो कुछ हो रहा है ऐसा, And I used to spend most of my time in Sephora at that time, 2011 and 12. And then I realized that, I have to do this thing professionally because, after marriage, I have to leave this. This is not something which I want to do. And while flying only, I joined some institute. Okay. And I learned makeup professionally for just a couple of months, not even months, yeah. And I still was freelancing and flying after my marriage in 2013. But then again, I think I am a fearless person. I don't even think twice to take some kind of decision. And it was a very difficult, that was a one turning point of my life wherein I chose, I have to leave a very, very high paying job. I still remember that this was $1,000 check in my hand and मैं और Rahul, he was also a struggler and मैं भी ऐसे ही like क्या करे नौकरी छोड़ दे. क्योंकि I wanted to do makeup then because उसका तो मुझे future नहीं दिख रहा था. This airlines was a future in terms of money but not in terms of family wise. Right. So he said, do whatever your heart says. I am with you. Really good question for you regarding this. What? 3 cheezein basically. Are you in it for the passion, money or fame? Because we know you're pretty famous and prominent in the makeup industry. I think if you'll ask me, one straight answer comes from my heart is passion. Nothing above passion. Very true and very honest that I think I have left few things because of money also. And I left money. It was a very high paying job and then at that time I said कि एक बार एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो गए और ये पास दे दिया दोबारा नॉर्मल इंसान की तरह वापस आएंगे लाइनों में लग के एकदम से ओके आई एम अ कैबिन क्रू और लेट मी गो इन ऐसा नहीं होगा. राइट. सो आई डिसाइडेड कि आई हैव टू लीव. मतलब मेरे पास में कोई हेल्प नहीं थी. माई हस्बैंड कम्स फ्रॉम अ वेरी सिंपल बैकग्राउंड. दे आर वेरी एजुकेटेड एंड सर्विस क्लास बैकग्राउंड एंड आई नो फ्रेंड्स नो बडी. आई हैड नो आइडिया हाउ टू स्टार्ट. But then I thought कि यार if I've thought that I have to do, I have to do. This is something I don't want to do. This is something I have to do. And at that time, I left my job in 2013 or I think 14 somewhere in May, June. And then I just started working. Like, so if you have to put these 3 things in order, आप कैसे order करोगे? Passion, money and fame को? Okay. In the way what's more important to you? Passion, money and then fame.
passion, money, and then fame. then fame. Of course. Fame is last for me. I want to work for my passion and if I want to earn money. And then if fame comes or it doesn't come, doesn't matter यार. Ultimately तो काम तो सब पैसे के लिए ही कर रहे हैं और of course. That 3 Idiots का dialogue याद आता है मेरे को तो इसमें. I forgot it what dialogue is, but हाँ वही. मतलब ultimately हम लोग काम तो पैसे के लिए कर रहे हैं तो उसमें famous है कि नहीं है, it doesn't matter. It doesn't matter in the end. But yeah, as an influencer, we get influenced by others' life. But I think I'm a little sorted in my head in that ways because I don't compare. I've got 2 kids. People who are somewhere, you know, maybe they don't have what life I have. They don't have that struggles what I have. Yeah. So I think... And then I feel in today's world, it is very important to have that clarity also when everyone is influenced by social media on such a level that you can either just drown in that sea of fame and getting famous or like having your choices sorted. Yeah, I am. I think that's because my husband is. He puts me very much grounded and he keeps me grounded and the kind of family I'm born and brought up, and of course now also when the family I am with, they are very very you know, mentally strong and very educated kind of people. So they have a very simple thinking and simple living and high thinking. So I think now I'm more influenced by that rather than social media. So I do because that's my job, but still I draw a line, you know. I don't host giveaways on my account to attract unwanted janta. So that's my rule. Yeah. It's been... So you have your things I sorted. have my that things. This is किसी को what I आना want है आ जाओ, मैं पूरे efforts करूँगी to promote the thing and all that because of course maybe you're paying me or maybe it's out of good thing, but then okay, I will not stoop down to some level. You know, I have my things and lines cleared over there. इसमें मुझे एक और question I can ask. थोड़ा personal हो जाएगा. हाँ, no problem. So compared to Indian family में, आपके सिर्फ husband की जो family आपने बताई, they're well educated, grounded लोग हैं, and मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे बोलते हैं कि मुझे मेकअप सीखना है इंडिया में, थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि यार मेकअप करेगा तो मेकअप करेगी तो. Don't ask me. I was just telling her before you came. Before you asked the question which we were discussing. I just entered. So my elder one, he's an artist. He draws. He's 6-year-old and he draws beautifully. He's a painter. So he does all the canvas painting. And I was telling her, I have to not kind of stop him because I think it's too early for him to get into this. I don't mind if he becomes a makeup artist one day, which I think definitely वो मेरा वंश आगे बढ़ाएगा. God has not given me a daughter, तो definitely वो ही करने वाला है, ये मुझे पता है. But he's very much into, because he's a painter, so he gets attracted by colors and you know, sometimes I'm doing makeup, oh mama, you've got this colored pencils, how do you draw this? Wow. So I think मैं वो चीज़ें देख रही हूँ और मैं उसे accept भी करती हूँ कि अगर कोई, if there is a feminine side is strong in any boy, I think that's a very good thing because that boy will be emotional, that boy will always value maybe family or feelings above everything. And that is what needed in today's generation, because if you think the women can do everything on their own, become good housewives and the corporates and everything, I think वो एक लड़कों का एक वो emotional side strong होना, I think it's very important. So I'm very open to him, but I tell him that beta 17 years tak you have to study and then maybe you can be a painter. So he calls himself as an artist. Mama, I am an artist. How old is he again? 6. I am an artist. And he has the clarity to call himself. He has a clarity of thoughts that he wants to become a painter or something related to painting or something. So I was telling her. I told her that he gets it from his I don't know how, though I tell them they are, you know, amateur bloggers. Hi. So today, guys, I tell you this. But we have so many artists, like men in the industry now. I mean, there is no comparison. We cannot really even like think of a ratio because it's just we're all blooming together. Yeah, I'm very open because as I to see this thing at my home every day. I experience this every day. That, you know, he's fond of not makeup, something related to creative artistry, craft. You know, he draws puppets, so many things I can't even name them. So coming to this, like the artist thing, if you had to pick one artist in India to get your makeup done
They cannot be your assistants or your students. But a prominent prominent makeup makeup artist in India. ये आप artist. मुझसे नहीं, आप किसी से भी पूछोगे ये बहुत डिफिकल्ट है बताना, तभी तो क्योंकि क्वेश्चन है, तभी तो जब आप अपना मेकअप एक बार खुद करने लग जाओ, आप लैशेस भी नहीं किसी और से लगवा सकते। मैं आज भी 4 बारी लैशेस लगा के उतरवा कर आई हूँ, मैं कहा यार नहीं मुझे नहीं अच्छी लग रही, मैं खुद ही लगाऊंगी, तू रहने दे। Same. हाँ, I applied, I removed. मैंने कहा नहीं ये तो मैं Yeah. कैरी नहीं कर पा रही, ये तो वो है। But there are so In many artists. I mean, India- there would be one person who you would at least want to like give it like Try. Yeah, like Somebody who I just want to try, or somebody whom I like and admire and try. yeah. Like somebody and who would admire. trust to do your Someone makeup. you would trust to do your makeup, or like for any reason, whatever reason it could be, just give me a name and a reason. Name and a reason. Trust to do the makeup. Trust. So I think now I think because of the awareness, I think everybody is doing a good job, and it's not a ऐसे socially correct answer, because जब हमने makeup start करा था तब कुछ ना उतने ऐसे products थे, ना उतनी awareness थी. Right. But अब जो लोग नए सीख रहे हैं, like हम भी train कर रहे हैं अपने students को, तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो अब तो खैर मुझे लगता है कि market में सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बहुत rare है जो लोग बहुत कम ऐसा कर, ओ गॉड नहीं, पता है एक्चुअली आ भी रहे हैं दिमाग में, बट फिर ऐसे आ भी नहीं रहे हैं. One name top of your mind. One top name. of the mind, like someone you even like feel inspired by. You know, it could be anyone. Oh God! Come on, let's empower each other now. You should give me this List ना of people. options देनी चाहिए आपको, मैं उसमें से चूज कर सकती हूँ. ऐसे मुझे तो फन नहीं है ना उसमें फिर ऐसे नहीं आ रहा है ना दिमाग में कि यार मैं इंस्पायर्ड, आई गेट इंस्पायर्ड बाय. अब वही बात है कि ऐसा एक नहीं है कोई कि जिससे आप इंस्पायर होते हो. like we could also ask one person you would not get your makeup done from. मैं दूसरा वाला आंसर कर देती हूँ. So you have two options now. Oh God, in the industry I would want to get my makeup done from whom I like. यार किसका makeup मुझे पसंद है जो मेरे स्टाइल का हो. Actually Are you scared of offending someone? No, not at all. Like bindas cool. नहीं मेरे को कोई वो नहीं है, because I'm not even friends with anybody like that. So offending का क्या है? No. I'm very cool about it. It's nothing. I can come to this question later. पक्का से मैं आंसर करूँगी. Done. Definitely. Done. मैं भूलूंगी नहीं तब तक मेरा माइंड काम कर रहा है. ठीक है. I'll ask this. हाँ ये रख लो. So अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास एक. Okay. As an artist, as someone who's been in cosmetic and beauty industry for a long time now, what is beauty? I think beauty is accepting your flaws gracefully. Very very true answer. Like मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप हो, आप अगर आप एक 10 की स्किन टोन के हो, ठीक है, मैं भी मानती हूँ, आप 1 से 2 टोन गोरा होना चाहते हो या एनहांस करना चाहते हो, you should accept. I recently had a that incident where I just did a bride, and her in-laws were so upset with the before after reel, and they they literally called me up so many times to remove that, and I felt ki it's fine, you should accept. Like I have a lot of freckles on my face, and when I record sometimes my tutorials and all, I have it on my face, so I never use a Paris filter to remove it. I have it. It came hereditary from to me. So I think मुझे ऐसा लगता है कि beauty तो आप enhance करो with the right products, but आप change नहीं हो सकते ना. You just don't want कि यार मेरा ये change हो जाए, वो हो जाए. But even if you want it, then okay, that's also fine. मतलब. But आपको लगता है ऐसे कि इंडिया में ऐसा होता है ज़्यादा कि I have this skin tone, मुझे यही चाहिए, I don't care what you do, how you do it, but मुझे 10 स्किन टोन तो गोरा होना ही होना है. दिखता है आपको? बहुत होता है. And how do you deal with them then? सी हम मना नहीं कर सकते. एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप मना नहीं कर सकते. आपका काम है. इट्स लाइक आप दुकान चला रहे हो, वो कुछ भी मांग रहे हैं, आप मना थोड़ी नहीं कर दोगे. आप सिर्फ एजुकेट कर सकते हो कि मैम 4 to 5 टोन्स, अगर हम लेट्स से 2-3 टोन 4 टोन लाइट करते हैं, विच हैपेंस यूजुअली, वो नॉर्मल है, वो आपको थोड़ा नेचुरल लगेगा और इतना ज़्यादा किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा गोरी हो गई, ये हो गई, बिकॉज मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम. दे डोंट नो how you look apart from your own relatives, right? So that will still look okay, buildable. But if you want to do something like वो 8 से 10, तो वो शायद मैंने कभी किया नहीं है और मैं कर भी नहीं सकती, क्योंकि वो I think मैं नहीं कर पाऊंगी. मैं नहीं कर पाऊंगी, मतलब वो नहीं मैं कर पाऊंगी शायद. मैं एज अ आर्टिस्ट भी मैंने करा ही नहीं है कभी ना. इतना लाइट, मतलब 3, 4, 5 टोन आप जा सकते हो, जो हम यूजुअली भी जाते हैं, अपने लिए भी जाते हैं 1-2 टोन लाइट.
तो for dusky skin tone people who are not brides who are not comfortable, we go 3-4 shades light, but then yeah, not 8 to 10 8 to shades. 10 I shades. think I haven't done that. मुझे बस यही थोड़ा ब्यूटी का वो लगता है कि इंडिया में लाइक पीपल आर एडुकेटेड कि व्हाट इज ब्यूटी एग्जैक्टली फॉर देम. हमें सबको ने सेट सोशल कॉन्स्ट्रक्ट बन गया कि गोरा स्किन, लंबी हाइट, क्योंकि ये हमें सिखाया गया है ना, लड़की गोरी होगी तो उसकी शादी जल्दी होगी. हाँ, ओह वाओ, हाँ, Yeah, that is it. Is that a quote that goes around? मैंने कोई सुना No, नहीं. it is like that. हाँ, हम यही तो सुनते आ रहे हैं, अरे गोरी लड़की है इसकी शादी जल्दी हो जाएगी, लड़की लंबी है तो इसकी शादी, पतली है तो शादी जल्दी हो जाएगी, मोटी है तो लड़का ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी. तो हम तो कितने सदियों से, इट्स बीन आई एम लाइक ओवर 35 years, तो मैं तो तब से सुनते आ रहे हैं हम लोग ये. तो अब ये तो आई थिंक जनरेशन बाय जनरेशन, डेकेड बाय डेकेड ही स्लो होगा ये प्रोसेस. एकदम से तो हम सोचे तो नहीं होगा. थोड़ा ये तो that is what been feeding to us. That is what been It's good answer that you gave. मुझे अच्छा लगा काफी सुन के. हाँ, that is what happened. But that should change, yeah. So, coming back to makeup things, what is the difference between a makeover artist and a makeup artist, and what do you consider yourself as? See, I very proudly I say that I am a makeover artist. भाई हम तो बदलते हैं, लोगों को बदलते हैं. जो लोग ये कहते हैं कि मेकअप नेचुरल एनहांस करो, ये करो, तो फिर भाई आप खुद ही सीख के खुद कर लो. मुझे तो बहुत फ्रैंकली ये लगता है. कोई आ रहा है 20-25-30 हज़ार रुपये हमें देकर, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है. मेरी तो ऐसी ही क्लाइंटेज है. आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन अदर्स, बट मेरी तो यही क्लाइंटेज है कि वो यही एक्सपेक्ट करती है कि जब मैं जा रही हूँ एकता बख्शी के पास में, तो वो मुझे मेरे डी डे पे कुछ अलग ही बना देगी. Right. अगर वो उस एक्सपेक्टेशन से आ रहे हैं तो मैं एज एन आर्टिस्ट उसको डिमीन या उसको वो क्यों करूँ? क्यों करूँ मैं? भाई मुझे तो उसको और अप टू पे ही जाना है ना, मैं क्यों करूँ? Right. So I feel that I'm just not a makeup artist. I am a makeover artist. Yeah, I changed the personality. See, of course, there is a consultation. There are brides who want to look very subtle, and we do that. But I feel that I have a knack of doing both. Right. I can do something very subtle, and I can do something over glamorous also. Okay. Which I feel some artists lack. They have just one day, they can do something very their own style, but if at all somebody comes to them कि okay I want some kind of heavy makeup, they might not be able to do that. Right. तो मुझे ऐसा लगता है कि as an artist आपको सब आना चाहिए. You should be versatile. हाँ, आपको versatile, flexible सब होना चाहिए. हर बारी आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये मेरा genre यही है, मैं यही करती हूँ. आइडली तो ब्राइड्स और क्लाइंट्स आपके पास तभी आते हैं आपका वो देखकर, बट स्टिल यू नेवर नो, कभी कोई किससे इन्फ्लुएंस होकर कोई आपकी किसी और की ब्राइड देखकर आ जाए कुछ बोले. तो आई थिंक आई एम वेरी ओपन टू से दैट आई एम अ मेकओवर आर्टिस्ट. यस, आई डू अ मेकअप व्हिच एनहांस द ओवरऑल पर्सनालिटी. एंड आई थिंक आप जब वो मेकअप करते हो, जब वो मेकओवर हो जाता है पूरा का पूरा, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है बहुत बड़ा. और आई थिंक दैट कम्स अंडर मेकओवर. हाँ, मतलब मैं तो आई स्टिल रिमेंबर whenever I do a bride या कोई भी client, mostly brides I do, तो my staff जब वो हेयर के लिए जाते हैं, so my staff मैम ये लड़कियों के अंदर क्या कॉन्फिडेंस आ जाता है जब भी मेकअप रूम से निकलती हैं, ऐसे समझने लग जाती हैं अपने आप को, और जब आती हैं तो बड़े इससे चलती हैं. दैट इज व्हाट इट इज. ठीक है, आ रहा है ना उन्हें कॉन्फिडेंस की दे when you look good you feel good, right? You feel good, ठीक है, and you're getting paid for that. But like if you had to like give a distinction, a proper distinction between a makeover artist and a makeup artist, like what would that be? Like if someone calls themselves as a makeup artist, so what do you feel like they do? And if someone calls themselves as a makeover artist? See, again वही है makeover. See, as a makeup artist you are skilled to do makeup. You are trained to do makeup, okay? You know the basics, you know whatever the techniques are, and you apply them and you create that art and all. As a makeover, I feel when you have a knack to understand what extra my bride wants, Right? like okay, I as a makeup artist I know कि हाँ, जब आपका विजन बहुत elaborate होता है ना, जैसे अब हम 8-9 साल में करके ऐसे हो गया कि आई टेल माई ब्राइड्स कि यार मैं कंसल्टेशन अबाउट योर मेकअप मैं पहले नहीं कर सकती. क्योंकि हो सकता है मैं आपके मेकअप से 1 घंटा पहले कोई पिक्चर देखूं और मैं उससे इंस्पायर हो जाऊं कि यार मुझे तो ये करना चाहिए अभी. आई थिंक इसके फीचर्स और इसके इस पे देख के ये अच्छा लगेगा. सो व्हेन यू आर you're thinking and that your span horizon expands, I feel that's when you become a makeover artist. कि जब आप
क्लाइंट आपसे मांग रहा है कुछ भी which is something out of the box and you're able to deliver that, no? You're not scared, oh my god, ये तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया है, ये मैं कैसे कर लूंगी? Or maybe like consulting them overall look, like Yeah, what kind of कि ये भी jewelry अच्छा they should लगेगा, carry, what kind of color would suit their skin tone. हाँ, yeah, कि color whatever, कि आप ये लगा लो, ये मत करो, you know, you have a pasta, you don't have a pasta. So I think and then you differentiate between just a makeup artist and a makeover or a complete image transformation. So I think that's. I think you have a lot of good stories to tell us. इसमें से कहानी पूछते हैं बहुत प्यारा सा. सेगमेंट का नाम है Oops I Did It Again. So one embarrassing या कोई भी हो सकता है. Embarrassing होना जरूरी नहीं है, बट एक ऐसा मिसहैप, कुछ गलती कर दिया आपने मेकअप करते हुए या फिर अपने काम के दौरान, जो आपने अच्छे से छुपा भी दिया हो. किसी का नाम नहीं लेना ऐसे. नहीं नाम तो क्या आप तो बट एनी एम्बैरेसिंग मोमेंट. वो ही पूछ रहा है कि लाइक हाउ डिड यू डू इट. कौन सा एम्बैरेसिंग मोमेंट था ऐसा? एम्बैरेसिंग मोमेंट कि मैंने कुछ मतलब खुद के लिए एम्बैरेसिंग हो जाता है ना वो चीज. वो हमको पता है कि हमने गलती करी है. गलती या नॉट इवन गलती बट लाइक वी नो वी हैव मेस समथिंग अप. सी आई फील समटाइम्स हुई है कि गलती तो ऐसे नहीं होती है बिकॉज आई थिंक अब इतने साल हो गए हैं कि अब आप आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 8-9 साल के बाद में ना आपके अंदर में बहुत ज़्यादा पेशेंस आ जाता है. यू वुड वांट दैट क्लाइंट शुड गो हैप्पी रादर देन ओ माय गॉड आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट. स्टार्टिंग में मैं भी ऐसी ही थी. मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मैंने तो अपना बेस्ट दिया, इसको पसंद नहीं आ रहा, यही पागल है. एग्जैक्टली ऐसे ही होता है. बट नाउ आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड व्हेन यू आर 8, 9, 10 years old in the industry and you've done thousands of bride. तो अब ब्राइड की सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है रादर देन एवरीथिंग. वो यू नो मोर देन मनी ऑल्सो समटाइम्स इट्स लाइक यार ब्राइड हैप्पी जानी चाहिए क्योंकि आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है. एंड देन यू रिलेट कि यार उसका स्पेशल डे है, आपको स्पॉइल नहीं करना. तो गलती करके मैंने करेक्ट ज़रूर कर दी होगी बट आई डोंट थिंक सो कि मैंने ऐसे गलती करके छोड़ दी होगी. बट यू करेक्टेड इट. हाँ मतलब करेक्ट करके ही भेजा होगा, कभी ऐसे नहीं करा होगा. एंड देन I think few things is what my assistants मेरा जो एक जब मैंने एक सेट करा हुआ है कि when she leaves दरवाज़ा एंटर कर मतलब बाहर जाने से पहले you have to check lashes. You know my lash glue is at the counter and I tell them कि lashes आपको चेक करनी है जाने से पहले कि निकल तो नहीं रही. बिकॉज एक ये मुझे एक बहुत डर लगता है कि यार यू नो ब्राइड्स का कि एंड मोमेंट पे लैशेस ना निकल जाए, हमारे डोंट कैरी. थोड़ा सा निकल जाता है तो हम वी जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट इट कि निकल तो नहीं रही, निकल तो नहीं रही. मेरा कांस्टेंट लाइक माय यू नो मेरा ये कांस्टेंट रहता है लैशेस चेक करिए, लैशेस चेक करिए. मतलब 3-4 बारी में ड्यूरिंग दैट 4-5 घंटे मैं बोल देती हूँ लैशेस चेक करिए ना, लैशेस तो नहीं निकल रही कहीं से, लैशेस तो नहीं निकल रही. तो मेरा वो एक रहता है बट आई डोंट थिंक सो कि गलती करने का स्कोप है ये नहीं. मुझे एक हम ना बहुत रिसर्च करते हैं आर्टिस्ट से मिलने से पहले तो हमें एक बढ़िया सा नेगेटिव रिव्यू मिला है बट एक ही मिला है हमको, बस एक शुक्र है. तो हमें उसके बारे में जानना है. आई रीड आउट द कमेंट. हाँ प्लीज. तो मैं बताता हूँ आपको क्या था और काफी पुराना भी आई थिंक. अगर and it's not even related to your work, it's just like मैं बताता हूँ सीधा. तो 3 साल 10 महीने पहले की बात है. तो वेड मी गुड में एक तो मुझे बहुत काफी अच्छा लगा कि यू आर अवेलेबल ऑन एवरी सिंगल थिंग आउट देयर. हमने एकता बख्शी मेकओवर सर्च किया, वेड मी गुड में आ गया, एक्सपायरी में आ गया. तो उनमें से एक वेबसाइट में हमें ये चीज़ मिला है हमको. तो कमेंट रिव्यू ये है, आई बुक्ड हर फॉर माई एंगेजमेंट मेकअप विच इज टू हैपन इन जुलाई एंड अ मैनेजर कॉल्ड मी टुडे एंड कैंसल द बुकिंग स्टेटिंग सम पर्सनल इशू ऑफ एकता. एंड शी मेंशंस आगे कि 4 महीने पहले से मैंने बुक किया था, रैंडम मोमेंट में जो कोई मिला नहीं. एंड आई थिंक इट्स वेरी अनप्रोफेशनल ऑफ हर कि बुक करने के बाद भी सब कुछ होने के बाद भी एंड मूड मुझे कैंसिल कर दिया. नहीं आई थिंक ये तो फिर लिख नहीं, ये कभी मैंने अपनी 9-10 साल के करियर में अगर कभी बुकिंग कैंसिल करी है वो सिर्फ ड्यूरिंग कोविड टाइम करी है जब मैं खुद कोविड पॉजिटिव थी. ओके दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने बुकिंग कभी कैंसिल करी होगी क्योंकि एक तो वो मैं कर ही नहीं सकती थी बिकॉज आई वाज कोविड पॉजिटिव एंड आई लॉस्ट माय फादर इन लॉ एट दैट टाइम एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड दैट वाज द ओनली टाइम आई वो भी शायद 1-2 ब्राइड्स वो भी कैंसिल होकर वो मेरे असिस्टेंट को चली गई होंगी. आई थिंक दैट वाज द टाइम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस बिकॉज वो डेल्टा वेव थी जिसमें आप चाहकर भी झूठ भी नहीं बोल सकते कि नहीं कि मास्क डबल मास्क पहन कर लो एंड वो. एंड आई थिंक वो मेरी कभी अंदर से मुझे अलाउ ही नहीं करा मेरी कॉन्शियस ने कि यार मैं डबल मास्क पहन के ब्राइड को बोल दूँ. सो आई आउट लाउड ऑन इंस्टाग्राम आई स्टेटेड दैट आई एम कोविड पॉजिटिव. सो व्हाटएवर 3-4 bookings I have in that period I will have to
cancel Cancel that. them. But I think this is, I never remember that. 4 साल हो गए इस बात नहीं को. नहीं, I ये think है ही नहीं, ये नकली कुछ है. नकली हो सकता है. नकली ही है, ये नकली 100%. नकली है. I remember I had my gallbladder surgery and the 3 days का तो bed rest ही होता है, and 4th day I had a makeup booking. I took that. Both my pregnancies, my son was 20th October born, and 19th October I was doing makeup. It was Karwa Chauth, and I still remember I was doing Karwa Chauth makeup on some client. Wow. So, because I told you, it's passion. It's never, passion is never above all these. वही हम भी थोड़े से वही थे नहीं, कि हर रिव्यू अच्छा जा रहा है कि एक कहाँ से आ गया है. ये wanted to ask you about this. Is अगर ये something कुछ कोविड के टाइम का शायद अप्रैल में लिखा होता तो मैं 4 मान साल भी पहले, लेती. 4 साल पहले और का 4 है. साल पहले तो शायद कोविड, आई डोंट नो. 2020 में आया था ना, 3 साल हो गए, अभी तीसरा साल चल रहा है. हाँ, तो फिर बस ये कोविड के टाइम पे इट वाज दैट व्हेन आई वाज कोविड पॉजिटिव. ठीक है, we'll move on to the next question. Would you rather? I think I have a good question. You have a here. question? Yep. थोड़ा another hard hitting question है. अरे यार, लड़ाइयाँ क्यों करवा रहे हो? लास्ट फन भी करेंगे इसका बहुत ज्यादा. हाँ, वो नाम भी बचा है अभी. हाँ नाम भी बचा है. सो क्वेश्चन इज, हम सबको पता है ब्यूटी इंडस्ट्री में एक बहुत कॉमन नॉर्म है, कुछ इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज है जो क्या करते हैं कि दे पैसे मांगते हैं आपसे कि आपको अवार्ड मिलेगा. ठीक है, एंड हम कंपनी से भी नाम नहीं लेंगे, किसी हमें लॉ सूट नहीं हमारे ऊपर. बट देयर आर सर्टेन कंपनीज और वो काफी हैवी भी चार्ज करते हैं, 35,000, 50,000, 60,000 की आ जाओ, हम आपको अवार्ड दे देंगे. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये अच्छा इंडस्ट्री के लिए, बुरा इंडस्ट्री के लिए? नो, आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्ट, आई हैव डन दैट इन माय इनिशियल years when I was just 1 year old, when somebody came to me with this opportunity ki we will give you the award and recognition. I think when you are in your very very initial years, then maybe you get a push, you get exposure, you get that confidence, okay, you get that family boost and everything. But if somebody asks me now, I would rather say no to everything. It keeps on coming. आते रहते हैं, बहुत कॉल्स आते हैं. आई थिंक जस्ट नाउ फ्यू डेज बैक माय असिस्टेंट हैड अ कॉल अगेन कि मैम ये अवार्ड के लिए कर रहे हैं. तो नाउ आई डोंट थिंक सो दैट आई वुड वांट टू pay and get it. If you're giving me any kind of recognition just like that, I'll be humbled to accept it. Absolutely. But not now. But yeah, I think अगर initial years में if you have that money to spend 20-25 हज़ार रुपए हैं आपके पास to get that exposure maybe, and people who are maybe little desperate, फर्क पड़ता है इस अवार्ड से कुछ? वैसे पड़ता तो देखो कुछ भी नहीं है, बट वही है कि देखो इनिशियल ईयर्स में देखो अभी I want to answer this question as an Ekta who was very beginner and fresher in the industry, and as an Ekta who's 7-8 years back. experienced also. तो दोनों एकताज में फर्क है. Maybe at that time that Ekta was desperate to be in the limelight, and आप किसी मेकअप आर्टिस्ट को ले लो जो आज टॉप पे है, मे बी जो 7-8 साल पुराने, सबने अवार्ड लिया होगा, सबने लिया होगा. आप सबके उस पे जाओ, किसी ना किसी ने कोई ना कोई अवार्ड शिल्पा शेट्टी से इससे उससे लिया है. तो वो सबको एक उस टाइम पे ये होता है, वो मिल जाता है, एक बूस्ट मिल जाता है. For that little bit of fame, like moment Entitlement भी हो जाता है थोड़ा. और ये पब्लिसिटी स्टंट ही तो है. मतलब ये है क्या, एक मेरे को ऑनेस्टली लगता है ये बहुत बुरा है, क्योंकि ना कि जो एक्चुअली अच्छे लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे आर्टिस्ट गांव वगैरह में बसे होंगे जिनका काम लोगों ने देखा नहीं होगा, एंड आई थिंक इट रियली टेंट्स वो लोग ही सबसे ज्यादा लेते हैं. वही लोग सबसे ज्यादा लेते हैं, उन्हीं लोगों को ये सबसे ज्यादा अप्रोच करते हैं कि वो लोग बिकॉज इतने ज्यादा अनअवेयर्ड और इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है इस मामले में कि it's easy to lure them into this. उनकी जो क्लाइंटेल है, मे बी दे आर आल्सो लाइक उनको फर्क पड़ता है, they don't know what goes behind the whole concept. So इसमें यार ये तो फिल्म फेयर भी बिकते हैं, तो ये हमारे अवार्ड क्या चीजें हैं. और क्या फिल्म फेयर बिक रहे हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, ये लोग ले रहे हैं पैसे देकर, तो हम तो बहुत ही छोटे प्राणी हैं. क्या करें. सही बात है. सो ये सारे हमारे हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस खत्म होते हैं. लेट्स फन नाउ. लेट्स आंसर करें. बहुत अच्छा आंसर करें. Let's come to the fun section now, which is would you rather. So we'll give you 2 options and you have to choose one. Pick one. Okay. Arjun, you want to start? हाँ, तो सुना मैं साउथ इंडियन, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, साउथ इंडियन फूड और नॉर्थ इंडियन फूड? Actually not both, but then अगर मुझे चूज करना होगा तो मे बी साउथ इंडियन. साउथ इंडियन, व्हाई?
थोड़ा आई लव इडली सांभर, आई डोंट नो व्हाई बट आई मेरे को तो पराठे अच्छे लगते हैं, मक्खन मार के मस्त मक्के दी रोटी। आई लव दैट आल्सो, इडली सांभर, इडली सांभर लिटिल हेल्दी इन माय माइंड ना, तो बस मुझे लगता है कि हाँ हेल्दी तो बहुत है, होता तो फिर मुझे वो बेटर लगता है ऑप्शन में। मेडिटेशन और वर्कआउट? वर्कआउट, क्लियर आंसर था, वर्कआउट मतलब। Have you ever meditated? Do you meditate though? नहीं, मैं No. मैं सो जाती हूँ, मैंने 2-3 बारी ट्राई करा, कसम से मैं सो गई। एंड मेरे योगा वाले सर मुझे उठा रहे थे कि मैडम वापस आइए, मैडम वापस आइए, और मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगा, तो मुझे लगा कि आई थिंक ये ना होगा। वर्कआउट इज माय, या इट गिव्स मी पीस। ठीक है, सिटी और स्मॉल टाउन? सिटी, सक्का फॉर सिटी लाइफ। मेरे को तो पहाड़ भी नहीं अच्छे लगते, एंड नो आई लव सिटी लाइफ। मेरे लिए अगर हॉलीडे जाना है तो दुबई, नॉट मालदीव्स। ठीक है, yeah, I'm a city life person. बीच और माउंटेन्स? बीच। समोसा और मोमो? वैसे तो मैं दोनों ही नहीं खाती, ट्रस्ट मी। मोमोज तो मुझे याद भी नहीं मैंने कब खाया था, बट हाँ अगर पिक करना है तो समोसे का आउटर कॉर्नर, अंदर का नहीं। अंदर का वो जो एकदम समोसा माइनस आलू, समोसा माइनस आलू, करारे वाला विद चाय, चटनी और मटरी इन प्रिसाइज। मट्ठी होगी, मट्ठी होगी फिर तो। ठीक है, मट्ठी पर्सन यार। कार और ट्रेन? ट्रेन। I want my kids to go in train यार। मेरे को इतना मन करता है ट्रेन, मतलब इतनी फॉन्ड मेमोरीज हैं ट्रेन की। मतलब बच्चों को हम लेकर ही नहीं जा पा रहे, because we don't plan trips accordingly, but I really want them to experience the train journey. They should experience. When was the last time you traveled in train? I traveled in train in December for my this on Venue Bride. Okay. So yeah, I traveled. But yeah, I love train. There is something train. Nostalgic, something about trains, and I love it यार। बहुत, हमने तो खैर स्लीपर क्लास में ट्रैवल करा है, जब अपने टाइम पे एसी तो नहीं अफोर्ड कर सकते थे। And even like while we're talking, you can even like smell the train right now, right? Like it just comes. और जो ब्रिज से चलते हैं, दुक दुक हाँ, दुक दुक क्या, और नदियों में 1-1 रुपए डालने, एंड रैंडम एक कंपार्टमेंट 6 लोग जितने भी लोग बैठे होते हैं, क्या दोस्ती हो जाती है। जैसे कि मैं केरला जाता था तो 3 दिन ट्रैवल होता था वो, और इतना मस्त मजा आता था ना कंपेयर टू फ्लाइट्स। एंड ट्रेन्स में भी स्पेशली आई लाइक ओवरनाइट जर्नी, बर्थ में सोने वाला, वो बेस्ट है। दिन वाला नहीं, कोई भी ओवरनाइट जर्नी हो तो वो आई बीच में लोग आके परेशान करते, चाय ले लो, कटलेट ले लो, ये ले लो। really fun, it's really fun. It is fun. अच्छा, would you rather pollute the air with Diwali or pollute the water with Holi? Okay, well, both not. Why? Because Diwali to definitely not. Maybe a bit of Holi because of again kids, because अब कुछ चीजें उनकी वजह से करनी पड़ती हैं, but I am totally against for both. Yeah, no, nothing. So which is your favorite festival? I like Diwali. No. दिवाली अच्छी लगती है मुझे। दिवाली में पटाखे जला के बिना पटाखे जलाए? बिना पटाखे जला के। I don't play. Do your kids use crackers? फूसली बम, बिजली बम, ये I think they're the best. हाँ, they are the best. हमने उसी नहीं करा है। अब तो मिलते भी बहुत कम है, बेचारों की किस्मत में ही नहीं आए हैं। हाँ। अपने टाइम तो बहुत, इवन मैंने अपने टाइम पे भी बहुत कम करे हैं। मेरे जो फ्रेंड्स होते थे, जो थोड़े लड़के फ्रेंड्स होते थे सोसाइटी में, कॉलोनी में, वो लोग करते थे तो उनके साथ कर लिए, बट या हमने कुछ ऐसा सच नहीं हुआ कि भाई पटाखे लेकर आने 1000-1500 रुपए के, ऐसा नहीं रहा है कभी। सो मैंने नहीं करे, इतने पटाखे नहीं बजाए, तो मैं इतनी फॉन्ड भी नहीं हूँ पटाखों की। मेरा भी कॉन्सेप्ट रहता है पूजास एंड स्वीट्स। हाँ, पूजा स्वीट्स खा लिया। डोडा इज माय फेवरेट। डोडा बर्फी? ओह गॉड, बचाना पड़ता है। We'll order some डोडा for एक। नहीं, मैं पूरा खा सकती हूँ, मैं आधा किलो का डब्बा खा सकती हूँ। आई कैन क्लेम दैट, वो डेयर है मेरे लिए। तो बट या आई लाइक दैट वी गेट टुगेदर, फैमिली, लाइट्स, डेकोरेशंस, वो मुझे अच्छा लगता है। देन अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आउट ऑफ द ब्लू। अब जब से इंस्टाग्राम वगैरह आया है, एज अ मेकअप आर्टिस्ट कितना मुश्किल है इंडस्ट्री में लाइक टू सेटल होना विद इंस्टाग्राम ऑन माइंड? पता है मुश्किल है भी और नहीं भी, अगर आप उसको राइट तरीके से यूज करते हो। और मुझे एक बात ये भी लगती है कि इंस्टाग्राम तो जो है वो है, बट अगर आपकी स्किल्स भी अच्छी हैं किसी भी, यू नो, इफ यू एंड आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मोर देन इंस्टाग्राम, अगर आप काम अच्छा कर रहे हो और आपने जैसे 4-5 मेकअप करे स्टार्टिंग में, लेट्स से आपने फ्री में करे या आपने 1-2 हज़ार रुपए के करे, बट अगर वो 5 क्लाइंट को आपने सेटिस्फाई भेजा है ना, अर्जुन, आई एम टेलिंग यू, यू विल डेफिनेटली गेट द वर्क बैक। यू विल गेट। आप मेरे से लिखवा लो, चाहे आप इंस्टाग्राम, आई हैव सीन दोज स्टूडियोज और पार्लर्स और दोज मेकअप आर्टिस्ट जिनके फॉलोअर्स सिर्फ 10,000 हैं, बट दे हैव
ह्यूज ब्राइडल क्राउड एंड क्लाइंटेल यार. तो इंस्टाग्राम है फेम के लिए अच्छा है. मे बी I think more than bridal work, Instagram is there for your PR kind of a thing. You earn through that and all that thing. But अगर आपका ब्राइड का काम वैसे अच्छा है तो आपको वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है इंस्टाग्राम? इम्पोर्टेंट हो गया है, मतलब हो गया, नेसेसिटी बन गई. मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है इंस्टाग्राम करना. मतलब मैं तो एक तो माय हस्बैंड डजंट सपोर्ट इंस्टाग्राम. उसके लिए तो उसको क्लिक करना ही मतलब एक है कि उसको मैं बोलूंगी कि ये देखो ये मैं खड़ी हूँ तो यहाँ क्लिक कर, तो वो यहाँ कर देगा और यहाँ कर देगा कि अगली बारी उसे बोले ना फोटो खींचने के लिए. ही इज दैट स्मार्ट. तो वो तो कंप्लीटली मुझे कैमरा शाय. मैं भी करना, मैं भी करूंगा. गुड आइडिया. ये आइडिया ना, सो या ही गिव्स दैट आइडिया टू एवरीबॉडी. तो मुझे गुस्सा आता है कि ना कि हम किसी की फोटो खींचते इतनी बढ़िया खींच के देते हैं. हाँ. और बोल दो किसी को फोटो खींच दो. But when we was talking Ekta on her Instagram, I even like you posted recently कि how you like to take your own pictures and I could relate to that so much because satisfaction नहीं मिलती. You wrote in the comment, right? Like no matter आप किस फोटोग्राफर को बुला लो किससे, at the end you need what you want. मेरी तो लड़ाइयाँ होने लगी हैं फोटोग्राफर से क्योंकि मैं उन्हें काम ही नहीं देती हूँ. तो बट मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती कि मुझे बहुत फिल्टर्ड पिक्चर लगती है. एंड आई एम अ टोटली नो फिल्टर पर्सन. रील एंड रियल लाइफ में दोनों में. तो मुझे बहुत अजीब लगता है यार, जरा सी भी एडिटेड पिक्चर है तो मुझे लगता है कि यार ये मेरी ब्राइड नहीं रिलेट कर पाएगी इससे, नहीं ये मैं नहीं करूंगी. तो मुझे तो बहुत ही, तो आई थिंक इट्स बीन 9-10 years आई एम क्लिकिंग माई ओन ब्राइड्स. तो अब तो मैंने सबको एक्सपर्ट कर दिया थोड़ा थोड़ा आके कि मैंने कहा तुम इतना तो एक्सपर्ट हो जाओ कि मेरी रील्स बना पाओ. ब्राइड्स को तो चलो मैं हैंडल कर लूंगी, मेरी रील्स बना लो. डन. सो या Prerna, I think you had one. Yes. So would you rather teach makeup for the rest of your life or do makeup on clients? Like what would you prefer? Like what? I would want to do makeup for rest of my life. Oh my god, I love doing makeup. मतलब मेरे लिए therapy है. Workout and makeup, both the things are like therapy for me. Whenever there is a bride sitting on my chair, मेरा starting से लेके end तक सिर्फ एक मोटो रहता है कि ये खुश जानी चाहिए. और ये मैं बहुत दिल से बोल रही हूँ मतलब. और ये कुछ 5-6 सालों से ज्यादा हुआ है. इनिशियल ईयर्स में आई विल से कि एक अना होती है एक हर बडिंग मेकअप आर्टिस्ट में दैट ओ माय गॉड वी आर डूइंग बेस्ट, वी आर द बेस्ट, वी नो. बट जब आप इतने कंपटीशन में हो तो आपको ये रियलाइज होता है कि रियल काम जो आपको मिलता है ना वो रेफरेंस से, और आप जो एक्सपीरियंस ब्राइड को देते हो वो उससे मिलता है. जो रियल काम है जो रेगुलर आएगा आपके पास, रेगुलर आएगा वर्ड ऑफ माउथ से. तो मेरा 95% काम वर्ड ऑफ माउथ ही है. अगर ऑप्शन मिले अब जिंदगी में सेलिब्रिटी का मेकअप करोगे, डिफरेंट सेलिब्रिटीज, या फिर अपने जो नॉर्मल क्लाइंट्स हैं आपके? नॉर्मल ब्राइड्स थ्रू आउट माई लाइफ. आई वांट टू डू माई ब्राइड्स. आई वुड वांट टू टीच ऑल्सो, बट टीचिंग स्टिल कम. See, when I come in my teacher avatar, so that is also something, oh my god, that takes me away. But अगर वैसे प्रेफरेंस देना है तो आई वुड वांट टू डू ब्राइड्स. मतलब मैं 50, 55, 60 साल की हो गई और मैं ब्राइड्स कर रही हूँ. कभी किसी सेलिब्रिटी का करने का मिला, बट कौन सेलिब्रिटी करोगे आप? मैं उर्वशी रतेला से मिलना चाहती हूँ यार. पूरी दुनिया मुझे कहती है यू लुक लाइक उर्वशी. मैंने बोला था आई वांट टू लिटरली वांट टू मीट हर. मैं ऐसा नहीं कि दोनों सेम मेकअप करेंगे, कोलाज करवाएं और फिर मैं बोल डालूं. मैंने बोलना नहीं चाहता, लाइक इट वोंट बी ऑफेंड, लाइक मैं अपनी नहीं चाहता, मैंने बोला नहीं. आई हैव बीन लिसनिंग दिस थ्रू आउट माय लाइक ओवर मतलब 5-6 सालों से मैं कंटिन्यूअसली ये सुन रही हूँ यू लुक लाइक उर्वशी रतेला, यू लुक लाइक उर्वशी रतेला. और मुझे समझ में ही नहीं आता, मैं लाइक मुझे नहीं पता चलता है. बट लाइक देयर आर so many people who say कि you look like उर्वशी. पब्लिक में किसी ने बोला वो उर्वशी जा रही है, कभी हुआ आपके साथ? पब्लिक में तो नहीं ऐसे हुआ. I don't know. I think पब्लिक में तो ऐसे नहीं. मेरे ऐसे कभी हो गया कि किसी पार्टी में किसी ने बोल दिया हो. हाँ, like my physiotherapist once said, मैं तो ना आपको एक दिन करके आपकी वीडियो बना दूंगा, ऐसा लगेगा कि मैंने कहा करने देखो जो बेनिफिट मिल रहा है. What is the maximum number of brides that you've done in one day? I think about 14-15. 14-15. And how was that day? Like, oh God, don't ask me. हम लोगों ने सैलून में बाहर से टेंट मंगवाया और एक्स्ट्रा चेयर्स मंगाई क्योंकि हमें खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि हम लोगों को कहाँ बैठाएंगे, क्योंकि 14-15 तो ब्राइड्स हैं बट उनके साथ जो 2-2, 3-3, 4-4 करके पर ब्राइड पार्टी मेकअप ऐड हो जाते हैं और फिर उसके बाद में उनके रिलेटिव्स एंड ऑल. सो हमने रियलाइज करा मेरी और मेरी, एंड दैट वाज इनिशियल ईयर्स ऑफ आई ओपनड अप अ सैलून. मैंने रियलाइज करा, मैंने कहा यार ये तो मैनेज ही नहीं हो पाएगा, इतनी तो जगह ही नहीं है, वी गॉट जस्ट इतना सिटिंग. तो फिर सैलून के बाहर हमने टेंट लगवाया एक छोटा सा, एंड देन हमने वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट करवाया, कुछ पानी वानी रखा,
So that was my first second season. But then I think 8 and 10 is now I don't take more than 8 brides. अब तो और भी कम हो गया. Now I do more exclusive कि ठीक है 3, 4, 5 brides से ज़्यादा नहीं. Like perfectly कम करो perfectly. But yeah, initial years तो we do 8, 10, 12 ऐसे है. But अभी भी slot wise है. If morning 4 हो गई, evening 4 हो गई, then that's manageable. But not at one time you take 8 to 10 brides. 100%. I don't. आपका Instagram देख रहे थे हम लोग, comments सब चेक कर रहे थे हम लोग. And we noticed like you give like really savage replies. Yeah. मस्त ठोक के जवाब देते हो. हाँ अच्छा ना. तो मैंने आपको बोला था ना मैं बिंदास हूँ. मेरे को तनी कुछ अलग से ही sarcasm है मेरे अंदर देने का ना. फिर your favorite comment जिसका आपने बहुत बढ़िया रिप्लाई किया हो कौन सा होगा? तो मैंने एक मेकअप भी रिसेंटली तो मैंने मेकअप ट्यूटोरियल डाला. तो एक मिनी मेकअप ट्यूटोरियल. पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट आप 2 घंटे का या 1 घंटे का या 40 मिनट के प्रोसेस को आपको 1.5 मिनट की रील में कन्वर्ट करना है. तो आप यही करोगे कि हर स्टेप को 10 सेकंड दिखा दिया. ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेप है वो आपने ज्यादा दिखा दिया. बाकी जो एक रेगुलर स्टेप है उसे कम दिखा दिया. सो आई रोट दैट कैप्शन मिनी ट्यूटोरियल एंड देयर वाज अ कमेंट कि वेयर देयर इज अ ट्यूटोरियल. Where is the tutorial? Is this a tutorial? Something like मैंने कहा. So I replied and कहा, oh I thought that I uploaded a cricket video over here. Sorry, I'll upload a makeup video again. So, मैं बहुत हंसा था कमेंट देख के. हाँ तो मेरे ऐसे ही रिप्लाई होते हैं थोड़े मतलब सरकाज़म वाले. या तो मैं नहीं करती और अगर मैं करती हूँ तो सरकाज़म वाले करती हूँ. मतलब वैसे तो मैं ना करना पसंद करती हूँ बट मैं लड़ती नहीं हूँ. व्हेन आई फील कि वो सरकाज़म नहीं ले पा रहा है और वो सेकंड कमेंट वो आ रहा है. सो इंस्टेड ऑफ piling it on, I rather block or delete. एक happy note पे कर दिया कि उसे समझ आ गया कि नहीं. But it's good savage reply जब देते हैं ना. Okay, but like on that happy note, let me sorry to cut you off, but let's end this session on a happy note, and I want you to give a few tips, like one tip for your brides, one tip for maybe your students, and then the last tip would be for people who want to enter the industry or who are just like upcoming artists. So what would you have individually? So 3 tips for these my brides, I'll say that first of all, do your research but don't over research. Okay. Follow 1 or 2 good artists. Good, I mean सभी good है. I mean 1-2 artist आप follow करो जिसको आपने book करा है या 1-2 जो आप जिनसे influence होते हो या maybe कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी से मेकअप कराना है. You can't afford that person. So ठीक है, it's okay, fine. But don't over research that you get confused. Right. Okay. And always just show a little trust on your artist. अगर आप किसी 7-8-9 साल पुराने बंदे को बुक कर रहे हो तो आई थिंक वो इतना इनफ एक्सपीरियंस है उसके अंदर कि वो समझ जाएगा कि आप एक पिक्चर भी दिखाओगे कि मुझे आपको कैसा मेकअप चाहिए. That's what I do. And for my students is that patience maybe it's I don't know. ऐसा नहीं होता है कि immediately काम मिल जाता है. हमें भी नहीं मिला. I still remember my days. But मिल जाएगा. But keep going, keep on creating some kind of content. And again, I feel कि success तो वही पाता है जो over passionate है. Normal passionate बंदे से तो काम नहीं होएगा. आपने सोचा कि नहीं मैं ठीक है हाँ मैं कर लूँगा मेकअप. अरे मॉर्निंग है छोड़ चल यार. इवनिंग की ब्राइड ले लेता हूँ मॉर्निंग की. नहीं. पैशनेट हो तो मुझे लगता है कि आपको कोई नहीं रोक सकता. लेट बढ़ जाओगे बट बढ़ोगे जरूर. राइट. एंड थर्ड was like people who want to enter the industry. People who want to enter just don't think that it's a easy busy industry and I want to enter. Oh my god, it looks so glamorous. Oh यार ये तो एक मेकअप करते हैं और 10,000 रुपये कमा लेते हैं. करना ही क्या है. नहीं यार वो 10,000 रुपये तक पहुँचने के लिए एक तो बहुत टाइम लगता है और वो 10,000 रुपये कमाने के लिए वैसा काम देना पड़ता है और वो आप एक बार ही तो कमा लोगे बट वो बार कमाने के लिए भी टाइम लगता है. सो आई थिंक आप एंटर होना चाहते हो मोस्ट वेलकम. सो आई थिंक दीज 3. So that was really great answer. Amazing. That was amazing. I mean, it has been such a candid, honest, fun conversation. But I definitely want to know the name. मुझे तो लगा कि मैं खुद भूल गया था. Thank you. मेरे दिमाग में ना 3-4 लोग आ रहे हैं जिनको मैं एक्चुअली एडमायर करती हूँ जो दिल से मैं करती हूँ. एक है आर्टिस्ट मुदित अरोड़ा. I really admire him a lot. Yes. I remember my initial days. I used to kind of follow him, and I like him as a person also. And
I feel कि he's very good. So maybe I would want to try him. So Mudit sir, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मुझे ले लेना एक दिन. So yeah, maybe I would want to. So Mudit is the name you're going for. Mudit, Arora yeah. sir, Yeah. yes. Okay. Yeah, maybe I want to do. Perfect. और कैसा लगा हमारा I सेटअप आज का? like it, yeah. This is so much fun. मतलब बहुत ऐसे time बाद I have like given an interview. But yeah, it was fun. I was hope fun? I have not made enemies after going from here. So over a cup of coffee, shoffee. If you want to speak about and know about Makk-Up, Shakk-Up, so like, follow and subscribe. Subscribe, do everything. Yeah. Thank you so much, And Ekta Bakshi. we have a gift for you. Yeah, छोटा we सा, do have a gift. Yes. A token of appreciation. My coffee with Karan had the moment. Whoa! See, this is the compliment we were looking Yes, for. yeah. Oh So, my God. a little gift from us. पर के लिए ही तो मैंने ये ऐसे sarcastic answers दिए हैं. इसी को पाने I के hope it's लिए. worth it. I We hope hope it's it's worth worth it. Yeah. Thank you so much. Ekta. Thank you so much for being Thank here. you. और चाय कैसी थी आपकी? पी नहीं है मैंने दोबारा It was बनवाऊंगी. मैंने तो Coffee, पी ली. Arjun. मेरी चाय थी. Oh, आपकी कॉफी थी. Get it again. Yeah. नहीं कॉफी बन जाएगी आपकी. कोई Alright, दिक्कत नहीं. guys. शो का नाम है Makk-Up Shakk-Up. Makk-Up, Shakk-Up. Shakk-Up. यार ये तो टंग ट्विस्टर हो गया. It is. Let's This is- meet for gupshup over a cup of chai or coffee shoffee and talk about Makk-Up Shakk-Up. Why Makk-Up? Because we've heard people Saying say Makk-Up. Makk-Up बोलते हैं ना बहुत Makk-Up. ज्यादा. Makk-up. और इंडिया में Makk-Up. आदत होती है चीजों को एक और चीज लगाने की चाय Yeah, Makk-Up yeah, Shakk-Up. yeah.